So let us discuss about human nervous system. Human nervous system किसका पार्ट है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है हमारी बॉडी में? एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन comprises two components: nervous system and endocrine glands. Nervous system, as it is consist of highly specialized cells called neurons, and as we already know in class 9 you must have learned that endocrine gland secretes hormones. So neurons and hormones, they work in a coordinated manner, right, in a synchronized pattern for the proper functionality of our body. So today let us discuss about human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें न्यूरॉन्स, जो पूरा किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से बना है बेसिकली. सो कंट्रोल सिस्टम क्यों बोला है? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट ब्रेन, राइट, इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अगर यहाँ सर पे चोट लगे तो आपकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी, राइट. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. इट इज़ वाई? बिकॉज ब्रेन इज कंट्रोलिंग all the activities of our body. So let us start with the neurons. It is a structural and functional unit of a nervous system. So what are the three basic functions of nervous system? Basic function क्या होगा nervous system के? कभी भी आपको कोई स्टिमुली को एकदम से रेस्पॉन्स जो आपका आता है बॉडी से, सो हाउ आ नर्वस सिस्टम इज गिविंग मैसेज टू दैट अफेक्टेड टिश्यू और बॉडी पार्ट टू गिव इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो कैसे होगा कि सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी नर्व्स कैरी दैट मैसेज, रिसीविंग सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट. सेंसरी नर्व्स उसको लेके जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. एंड देन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ. तो वहाँ पे जो मैसेज होगा उसका प्रोसेसिंग होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगा. एंड देन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम gives proper instructions that how to respond to that particular stimuli, and who will carry that information? Motor nerves. So sensory nerves are carrying information from external and internal environment to the CNS, and from the CNS motor nerves are carrying information to the affected organ. Now human nervous system comprises of two components. Human nervous system टू कंपोनेंट से बना हुआ है. व्हाट आर दिस? CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises two components, brain and spinal cord, right. Peripheral nervous system, it comprises of all the nerves which are coming from or which are arising from brain and spinal. brain और spinal cord की जितनी भी nerves हैं वो peripheral nervous system में आते हैं. So how many how many nerves are coming from the brain? They are 12 pairs. ब्रेन की नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, एंड द नर्व्स विच आर कमिंग फ्रॉम स्पाइनल आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, जो 31 पेयर्स हैं. यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं. आगे बात करते हैं PNS को फर्दर डिवाइड किया गया है. PNS is further subdivided into two divisions, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. सोमैटिक में जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर विल, राइट, लाइक मूवमेंट, राइटिंग. So all these activities are coming under voluntary actions. So these voluntary actions are controlled by somatic nervous system. What is autonomic neural system? Autonomic क्या है? It basically comprises all the involuntary activities of our body. जैसे जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ हैं, स्टमक, मसल्स ऑफ स्टमक और किडनी, and then esophagus, all these involuntary actions, and then heartbeat, these are involuntary actions, these are not in our control, right. So such activities are controlled by autonomous neural system. It is further divided into sympathetic and parasympathetic. ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं इनके अपने फंक्शंस में, राइट. इट इज़ स्टिमुलेटरी, इट इज़ इनहिबिटरी. ये बेसिकली एक्साइट करेगा एक्टिविटीज़ को और ये रिलैक्स करेगा ऑर्गन को, राइट. फाइट एंड फ्लाइट, जब कभी भी हम इमरजेंसी में होंगे तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स आएंगी फंक्शन में, और पैरासिम्पैथेटिक जब रिलैक्स करना होगा कभी भी तो वो उसमें बेसिक काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक.
अगर हम फंक्शंस के बेस्ड पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को based on their functions, so there are two types of nerves present in peripheral nervous system. What are they? Afferent nerve fibers and efferent nerve fibers. There are two types of nerve fibers, right, coming from the peripheral nervous system. What are they? Afferent means ये ट्रांसमिट करेंगी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन्स टू CNS, राइट. टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगी. जैसे कि मैंने पहले बोला कि द रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस. Sensory nerves carry information from environment to the CNS. So those nerves which are carrying information from the environment, external or internal environment to the CNS, are known as afferent nerve fibers. और efferent क्या है? Efferent which are carrying message from CNS to the concerned tissue. इसको हम efferent path भी बोलते हैं. So let us coming to a very important topic, human brain. What is human brain? Human brain, it is a part of, as I have already told you, that it is a part of human nervous system. Central nervous system में आता है brain, human brain. Human brain basic हम बातें करते हैं. Basically it is covered by, is present in a cranium or bony box, and it is covered by membranal coverings, right, 3 in number, which are known as cranial meninges. Outer one is durameter, middle is arachnoid, and the innermost is pia meter, जो ब्रेन टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है.